हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आज अपने सॉल्व करने वाले नवनीत के वर्कबुक की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, 12 ग्राम हाइड्रोजन इन बर्nt in the presence of excess oxygen. The mass of water formed is 216 gram. Next, which of the following is not a displacement reaction? तो डी वाला 4NH3 plus 5O2 will give NO plus 6H2O. Next, identify the reducing agent in the following reaction. तो reducing agent कौन सा बनेगा? H2S. Next, by which of the following name CaOH twice is given? तो सारे के सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, लाइम वाटर, सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम या तो स्लैक लाइम. ओके. नेक्स्ट, silver chloride is stored in a dark color bottle because to avoid the effect of sunlight. Next, on immersing the zinc rod in the solution of copper sulfate, you will observe deposition of copper on zinc. Next, identify the type of reaction for 2Cr plus Al2O3 will gives Al plus Cr2O3. मीन्स क्या आएगा? दो टाइप के रिएक्शन मिलेंगे, एक तो रिडक्शन एंड रेडॉक्स. इसके अलावा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन भी है. क्विक लाइम व्हेन एडेड इन वाटर प्रोड्यूसेस द हिजिंग साउंड. स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन? तो उसमें आएगा रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन ऑलवेज ऑकर एट कैथोड. ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. रिड्यूसिंग एजेंट गिव्स H2 और रिसीव O2, तो ट्रू आएगा. हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ट्रू है. मैग्नीशियम इज हाईली इनएक्टिव मेटल, तो फॉल्स है. कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ऑन हॉट कॉपर ऑक्साइड, तो ट्रू आएगा. The proportion by the volume of H2 and O2 gas obtained at electrodes during the electrolysis of water is 1:1, so false आएगा. Next, in decomposition reaction, single reactant forms two or the more product, तो true. आगे बात करेंगे fill in the blanks की. The color of lead nitrate powder is white. Next, matter can neither be created nor be destroyed. It is called the law of conservation of mass. Next, the molecular formula of sulfuric acid H2SO4. During electrolysis of water, electrodes are connected with 6 volt of battery. Dash is the more reactive metal among the Fe and Mg. तो कौन ज्यादा है? तो Mg. Next, answer in one words. Name the reaction observed during the rancidity of food. Oxidation. What is obtained by the combustion of methane? So CO2 and H2O. Name two metals which do not corrode. So gold and platinum. Which ions are present in the barium sulfate? So Ba plus 2 or SO4 minus 2. Give an example of antioxidant, तो nitrogen gas. Next, answer the following question is briefly. So first questions, write the chemical reaction taking place when hydrogen gas is passed over hot copper oxide. Identify the type of reaction. तो it is a reduction reaction and उसकी reaction copper oxide को लिखा जाएगा CuO प्लस हाइड्रोजन H2, हीटिंग होगा, कॉपर रिमूव होगा और वाटर आपका कॉपर और वाटर रिमूव राइट अलग हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड इन
whitewashing the wall of the house. So calcium hydroxide is used in the whitewashing the wall of house. Its molecular formula is CaOH twice. Which compound is used in the black and white photography? So silver bromide and silver chloride. Next, what characteristics of food obtaining oil and fat changes when exposed to air for a long time? तो उसका आंसर आएगा taste and the smell of food get changed due to rancidity. Next questions. Which precipitate is obtained by mixing the solution of sodium sulfate and barium chloride? तो white precipitate of barium sulfate is obtained. इसके बाद मैच द फॉलोइंग ग्रीन, तो क्या मिलेगा आपको? फेरस सल्फेट. एंड ब्लू कौन सा मिलेगा? तो उसमें आएगा कॉपर सल्फेट, राइट? ओके. नेक्स्ट, क्विक लाइम को क्या लिखा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट. स्लैक लाइम को लिखा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड मार्बल को लिखा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड. रिएक्शन यहाँ पे दी है. फर्स्ट फोटोसिंथेसिस वाली है, सेकंड कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाली. तो कॉपर और वाटर रिमूव हो जाता है, आगे अभी से एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन होने के बाद सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाते हैं. लास्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड NH2 कन्वर्ट होगा मिथेनॉल CH3OH. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड विद द गिवन डायग्राम. Does the reaction occur in the test tube as shown in the figure? State the change in color. तो आंसर आएगा reaction does not occur, color change does not take place, hence order of solution remain green. Correct? Okay, the next section B है regarding question 2 marks वाले. State the importance of balanced chemical equation. तो balance equation is the one in which number of different atoms on both the reactant and product side are equal. इसमें second point, balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of mass. Next, balancing the chemical equation has no defined method and is purely a trial and error attempt. Next questions, why should the magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो magnesium ribbon react with oxygen present in air to form a protective and inert layer of magnesium oxide on its surface. This layer is unreactive and prevent the ribbon from burning, and thus magnesium ribbon be cleaned before burning in air. Next questions की बात करेंगे. Why do we apply the paint on iron article? तो surface of iron is coated with the paint to prevent it from rusting. So iron does not come in contact with air, and thus iron object remains safe for a longer period. Next questions. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो आंसर आएगा when an iron nail is dipped in the copper sulfate solution, iron being more reactive than copper, it displaces the copper from the solution. As a result, iron sulfate is formed and which is green in color. Thus, color of copper sulfate solution change. Next, section C, question number 1. When you mix the solution of lead nitrate and potassium iodide, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन? तो येलो कलर का मिलता है, राइट? नेक्स्ट, राइट द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड नेम द सब्सटेंस. तो नेम को सब्सटेंस कौन सा आएगा? लीड आयोडाइड. तो लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट में. नेक्स्ट, उसमें विद टाइप ऑफ राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन?
Write equation for this reaction. In decomposition reaction, a single reactant by absorbing heat is broken down into two or more product. उसमें बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे. While combination reaction opposite to the decomposition reaction is observed. In combination reaction, two or more substances combine form a single product with heat change. तो उसमें आएगा C plus O2 will give CO2 plus heat. Okay? चलो guys. Give scientific reason. Respiration is an exothermic reaction. So food is broken down into simple substance during the digestion. Food consists of carbohydrate, protein, etc. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ in our body cell and provide energy. This reaction is called respiration. और उसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है. C6H12O6 plus 6O2 will give 6CO2 plus 6H2O plus energy. What are called a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and precipitation? Write one equation each for this type of reaction. So first of combination reaction, a reaction in which a single product is formed from two or more reactants. C plus O2 will give CO2. Second decomposition, reaction in which single reactant break down to give the simpler product. So 2AgCl will give 2Ag plus Cl2. Next, displacement reaction. Reaction in which more reactive element displace the less reactive element from its solution. So reaction CuSO4 plus Fe will give FeSO4 plus Cu. Next, precipitation reaction. Chemical reaction in which reactant react to form insoluble precipitate. Reaction आएगा Na2SO4 plus BaCl2 will give 2NaCl plus BaSO4. Next questions, explain करना oxidation and reduction. उसके बाद लिखना endothermic and exothermic. So it is reaction in which atom or molecule gain oxygen or loses hydrogen. C plus O2 will give CO2. उसके बाद reduction की, it is reaction in which atom or molecule loses the oxygen or gain hydrogen. So zinc oxide plus carbon will give carbon monoxide plus zinc. Endothermic reaction, this reaction in which heat is absorbed. CaCO3 heat absorb CaO plus CO2 आता है, CaO plus CO2. O2 नहीं आता, CO2 आता है. Last endothermic exothermic reaction, this reaction in which heat is evolved. C plus O2 will give CO2 plus 8. Okay, so that's यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.